Good morning, children. Now we are going to start the chapter Play with Patterns. Okay, we have finished already Fun with Numbers. Now the new chapter is Play with Patterns. Okay, you must have heard this word pattern. Pattern means what? So, patterns are the shapes. When the shapes are repeatedly combined, patterns are formed. कोई भी shape है, like this shape. इट इज़ रिपीटेडली कम्बाइंड. इसकी शेप को दोबारा से रिपीट किया है और उनको अटैच कर दिया है. राइट. सो व्हेन द शेप्स आर रिपीटेडली कम्बाइंड, पैटर्न्स आर formed. Now I will show you how the patterns will be done. See here, some pots are made, but the difference is of colors. Here blue, red. So first you have to draw 3 pots. After red, blue, again red, again blue. Here it is, alphabets are given. See the pattern, what pattern they have used. A. Okay, A and then B. Then again A, then B. What will come next? Yes, A and B. Okay. Now here you see one petal is given. Flower, one petal is given, and then here 3. Okay, after 1 there are 3 given. So after 3 they have given you 1, 2, 3, 4, 5. They have given a pattern 1, 3, 5. Again this will be repeated 1, 3, 5. Again it will be 1, 3 and 5. आपको पहले से ही दिया जाएगा. आपको पहले से ही जो स्टार्टिंग का पॉइंट होगा वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा. आपको खुद समझना होगा कि ये क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. उसी को आपने दोबारा नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में रिपीट करना है. हियर इट इज ऑल squares are made. Okay, and squares are divided into parts also. But now see the colors. It is, see, somewhere it will be clockwise and somewhere it will be anti-clockwise. कभी तो क्या होगा, इस तरीके से घूमेगा और कभी इस तरीके से घूमेगा. अभी ये क्या है, ये इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है. यहाँ पर ये है ब्लू एंड देन इट इज इन द नेक्स्ट. सी हियर, आफ्टर दिस इट विल कम हियर नेक्स्ट फिगर. आफ्टर दिस इट विल कम अप नेक्स्ट फिगर. आफ्टर दिस इट विल कम अगेन अप. Then it will come in this side. Then again it will come down. Here also see this semicircle is made. Then semicircle is shifted this side. It means again it is going anti-clockwise. ठीक है. उसके बाद फिर again it is gone up. Then again it is gone this side. See this. पहले ये यहाँ पर था, सेमी सर्कल का मुंह इधर को था. अब सेमी सर्कल का मुंह इधर को हो गया. अब फिर से यही पैटर्न स्टार्ट हो गया. इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है. फिर उसके बाद ये वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है. एंड अगेन दिस पैटर्न यू विल फॉलो हियर एंड देन दिस विल कंटिन्यू. आई विल मेक इट मोर क्लियर टू यू. ओके, सपोज here it is black coin, then I'm having 2 white coins here. You can see it very well. Black, 2 white, and then again it will be repeated 1 black, 2 white, 1 black and 2 white. Okay, see this series. Now if we come on the second number, here I have shown you few lines. You can take it as arrows also. So this is standing, sleeping, standing, sleeping, standing and sleeping lines. Okay, if we come to third one, here it is, what is this, square, then triangle, then circle, square, triangle, circle. Pattern shows us whatever will be started will be repeated again and again, then it makes a pattern. Is this clear? See here. Now if we come on the digits, patterns means not only designs, there can be some designs, there can be some exercises related to digits and alphabets together. So in this you see it is 1, 4, 7, 10, 13. How will you understand that after 1 4 has come, now what will come, now what next? So to understand this, what you can do is, from the second digit you minus the first digit, you will come to know how much difference is given. So 4 minus 1 is 3. It means here is the series of gapping of 3. So 1 plus 3, 4. 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 3,
13, right? Again I'll just let you know in Hindi also. ये नंबर्स की सीरीज में आपको कितने का गैप है आपको कैसे पता चलेगा, आपको देखना पड़ेगा. सो आपको सेकेंड डिजिट से फर्स्ट डिजिट माइनस करनी पड़ेगी, राइट? सो इट इज़ 4 - 1 3. सो इट मीन्स हमने जो इसमें ऐड करके सीरीज को बढ़ाना है वो कितने का गैप आया है, 3 का. लाइक 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 30. I hope these all things are clear to you and you can solve any kind of pattern which can be given to you in the next exercises.